Good evening, my dear students. Welcome back to your English class. Now, my dear students, let me tell you, today we are going to start a new lesson. And do you know what is the name of the lesson? I think you don't know. So don't worry, I'll say. The name of the lesson is A Beautiful Elephant as a Gift. What is the name of the lesson? A Beautiful Elephant as a Gift. I know, my dear students, you like gift very much. Everybody likes taking gift. सबको gifts लेना बहुत पसंद है. I also like it, and I know you might also be liking gifts. So, our today's lesson is on gift. Understood? So, without wasting much of our time, come we will start our today's lesson. So my dear students, take your page number 38, chapter 6. But before starting the chapter, let me tell you one thing, my dear students. When I will read the lesson, what you will do? You will not look here or there. You will look in your book and you will keep your finger on the line. Why finger on the line? Because it will help you to know that where I am reading. Understood? So, come we will start our chapter number 6, A Beautiful Elephant as a Gift. Now, my dear children, I like being with children and talking to them, and even more, playing with them. For a moment, I forget that I am terrible, old, and that it is a very long time ago since I was a child. Now here, who is there? Who is saying this? Chacha Nehru. Here, you can see in the picture, who is he? He is Chacha Nehru. So, as you all know that Chacha Nehru loves children, right? He loves to talk with them. He loves to be with them. He loves to play with the children. So, Chacha Nehru is writing a beautiful letter. So, in letter what he is saying that he liked to be with the children, talk with children, play with them for a moment. Why play with them? Why talk with them? Because while talking with the children, he forgot that he is an old man. Understood? Now come we will move forward. If you were with me, I would love to talk to you about this beautiful world of ours, about flowers and trees and birds and animals and stars and mountains and glaciers and all this world. Now what Chacha Nehru is saying, if children are with me, I like to talk with them. On which topic? Our world, means our nation, the beautiful nature, trees, mountains, birds, clouds, rivers, animals. चाचा नेहरू ये बोल रहे मैं अगर बच्चों के साथ रहता तो मुझे इस टॉपिक पे बात करना बहुत अच्छा लगता है. कौन सी टॉपिक पे? हमारी ब्यूटीफुल वर्ल्ड के बारे में. जैसे हमारे पास ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, माउंटेन पे आइस है, आइस मीन्स बर्फ, the birds flying in the air, the animals, the river flowing. So he loved to talk about nature with children. Now I hope you will be more sensible and open your eyes and ears to this beautiful and life that surrounded you. Can you recognize the flowers by their names and birds by their singings? How easy it is to make friends with them and with everything in nature if you go to them affectionately and with friendship. Now, to go with them affectionately and with friendship. Affectionately मतलब उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करना है, बॉन्डिंग बनाना है. किसके साथ? नेचर के साथ. Because when you make a bonding with the nature
it becomes a beautiful friend of yours. अगर हम नेचर के साथ बॉन्डिंग कर ले तो नेचर हमारा ब्यूटीफुल फ्रेंड बन सकता है. Understood? Because nature is having beautiful flowers, animals, birds, and we can make friendship with them. हाँ, क्योंकि नेचर के पास इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, तो हम उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं. Now next, our country is a little world in itself with an infinite variety of places for us to discover. I wish I had more time so that I could visit all the nooks and corners of India. I would like to go there in the company of bright young children whose minds are opening out with wonder and curiosities. I should like to go with them, not so much to the great cities of India as to the mountains and the forest and the great rivers and the old monuments, all of which tell us something about India's story. Now here what Chacha Nehru is saying means he liked to move in the country. Move in the country means he liked to what you can say roam in the country in important places. चाचा नेहरू को इंडिया के अपने कंट्री के कुछ important places पे जाना पसंद है, कुछ बच्चों के साथ जिनका माइंड ओपन है और क्यूरोसिटी से भरा हुआ है. क्यूरोसिटी मीन्स ईगर टू नो समथिंग. क्यूरोसिटी का मतलब है एक ईगरनेस रहती है इंसान के अंदर कुछ पता करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, if you like some dish and you like to make it from your own hand, so you are eager to know the recipe. अगर हमें कोई डिश पसंद आ जाए और हमें उसको खुद बनाना है तो आपको ईगरनेस होती है ना कि इसमें क्या क्या डला है, इसको कैसे बनाते हैं सीखने के लिए. that is known as curiosity. So Chacha Nehru is saying that if he had some more time in his life, वो बोल रहे हैं कि उनके पास अगर कुछ और ज़्यादा टाइम रहता उनके लाइफ में तो वो अपने कंट्री में मीन्स इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे घूमना पसंद करते, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना पसंद करते कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ. वो स्टूडेंट्स जिनको क्यूरोसिटी हो अपने इंडिया के बारे में जानने के लिए, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानने के लिए, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए. किसकी हिस्ट्री? इंडिया की हिस्ट्री जानने के लिए. Now come, let's see next. I have recently been to the United States of America, to Canada and to England. I found the children there were like the children here, and I easily made friends with them. And whenever I had the chance, I played with them a little. That was much more. Now see on next page. Now, interesting than many of my talks with the grown-ups who imagine they are very different and deliberately make themselves so. Now, what Chacha Nehru is saying that he had been to United States of America. अब चाचा नेहरू हमें ये बता रहे हैं कि वो कुछ दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहे थे. अमेरिका में रहे थे, कनाडा में रहे थे, इंग्लैंड में रहे थे. और चाचा नेहरू ये बोल रहे हैं कि वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है. वहाँ के बच्चे भी यहाँ इंडिया के बच्चों की तरह ही है. When he got the time, he played with those children. जब चाचा नेहरू को टाइम मिला तो चाचा नेहरू उन बच्चों के साथ खेलने लगे. वो बच्चों के साथ, थोड़ा ग्रोन अप्स बच्चों के साथ उन्होंने बात की. कौन से टॉपिक पे? इमेजिन के टॉपिक पे बात की. Understood? Now let's see more. Some months ago, the children of Japan wrote to me and asked me to send them an elephant. I sent them a beautiful elephant on behalf of the children of India. This elephant came from Mysore,
and traveled all the way by sea to Japan. When it reached Tokyo, thousands of children came to see it. Many of them had never seen an elephant. Now, what चाचा नेहरू is saying? अब चाचा नेहरू क्या बता रहे हैं कि चाइना के बच्चों ने, जो चाइना कंट्री के बच्चे हैं, उन्होंने चाचा नेहरू को एक लेटर लिखा और लेटर में क्या कहा? दैट दे वांट मी टू सेंड एन एलिफेंट. मतलब चाइना के बच्चों ने चाचा नेहरू को ये कहा, रिक्वेस्ट किया कि वो उनके लिए एक एलिफेंट सेंड करे एज अ गिफ्ट. तो चाचा नेहरू ने क्या किया? मैसूर सिटी से एक एलिफेंट को टोक्यो भेजा. टोक्यो जो चाइना में ही है, तो टोक्यो से एलिफेंट को चाइना भेजा. कैसे भेजा? बाय वाटरवे, मतलब शिप में. तो शिप में जब बच्चों के लिए चाचा नेहरू ने एलिफेंट भेजा तो thousands of children came to see. Many of them had never seen an elephant. मतलब जैसे बच्चों को पता चला कि चाचा नेहरू ने उनके लिए गिफ्ट एलिफेंट भेजा है, तो thousands मतलब इतने बच्चे वहाँ गए. कहाँ? सी पोस्ट में. किसको देखने के लिए? एलिफेंट को. दैट दे हैव नेवर सीन एन एलिफेंट बिफोर. मतलब वो बच्चों ने एलिफेंट को पहले कभी नहीं देखा था उनकी लाइफ में. अंडरस्टूड? नाउ कम लेट्स सी नेक्स्ट. सो वी मस्ट ऑल्सो थिंक ऑफ देयर कंट्री एंड of the many other countries in the world, and remember that everywhere there are children like you going to school and play, sometimes quarreling but always making friends again. You can read about these countries in your books, and when you grow up many of you will visit there. So go there as a friend and you will find friends to greet you. Now what Chacha Nehru is saying? That in our country, in the world, means पूरे वर्ल्ड में हर जगह बच्चे हैं. The children are going school. बच्चे हर जगह स्कूल जाते हैं. Understood? Making friends, friends बनाते हैं. Quarreling with them for some times means उनके साथ थोड़े टाइम के लिए झगड़ते भी हैं. बट आफ्टर क्वारलिंग अगेन दे मेक फ्रेंड्स. मतलब क्वारलिंग करने के बाद, झगड़ने के बाद वो फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं. सो व्हाट चाचा नेहरू इज सेइंग दैट आफ्टर ग्रोइंग अप, मतलब बड़े होने के बाद, यू ऑल्सो गो टू द countries, other countries and make friend. Go as a friend to other countries and greet them. मतलब चाचा नेहरू ये बोल रहे हैं कि अदर कंट्रीज में भी आप जाइए फ्रेंड के तौर पे और वहाँ के बच्चों से या ग्रोन अप से फ्रेंडशिप करिए. एंड दे विल ग्रीट यू एज वेल. मतलब वो आपको ग्रीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. If we meet other people in friendly way, they also become friendly. But if we are afraid of them, or if we show our dislike to them, they behave in the same manner. These are simple truths which the world has known for ages. But even so, the world forgets, and the people of one country hate and fear the people of the another country. And because they are afraid, they are sometimes foolish enough to fight each other. Children should be wiser. At any condition, I hope the children who read this will be more sensible. Yours for lovingly, Chacha Nehru, November 1958. Now what Chacha Nehru is saying that people, if you greet people respectfully, means अगर हम लोगों से respectfully, mannersly ग्रीट करें, बात करें, so they will also feel nice. मतलब हम लोगों से अच्छी से तरीके से, मैनर से, रिस्पेक्टफुली बात करें तो उन्हें भी अच्छा लगता है. स्पेशली द पीपल ऑफ द अदर कंट्रीज.
स्पेशली जो अदर कंट्रीज से जो पीपल आते हैं, जो लोग आते हैं, उनके साथ अगर हम मैनरफुल रिस्पेक्ट किए, उनको ग्रीट करें, उनको अच्छी तरीके से बात करें, सो दे विल ऑल्सो फील फ्री टू टॉक विथ अस, मतलब उन्हें भी अच्छा लगेगा अगर हम उनके साथ ग्रीट करें. फॉर एग्जाम्पल यू सी सम फॉरेनर्स कम टू इंडिया. फॉरेनर्स इंडिया आते हैं घूमने के लिए. If we respect them, we greet well with them, so what they will feel? Yes, the Indian people are very nice. They are respecting the other people. So my dear students, here we have completed our today's lesson. So I hope you all have understood it. If you have any question, any doubt or any problem regarding to the lesson, you can ask me. So my dear students, it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy. Be happy, don't trouble your parents. Okay, I'll see you soon. Bye bye.